Good morning, everyone. I welcome you back in the topic Euclid's geometry. But unfortunately, this topic is cancelled from the syllabus. There are a few concepts which are cancelled from the syllabus, and considering that, now I'm planning the next syllabus as well. So don't worry for it. But still, why I'm taking Euclid geometry as even then it is cancelled? The reason is we need all the concepts of Euclid geometry in further complete geometry. So, very important to learn to understand the concepts of Euclid geometry. Okay, so let us understand that first. Today, one more day will take to understand those concepts, and from tomorrow, we are going to begin the new topic, that is lines and angles. In case in the school, if this happens that you are being taught to those topics, those concepts which are being deleted, then please inform me as early as possible so that I will also take those concepts, because in the internal examinations those topics might be asked. So keeping that in mind, you also have a complete watch on it, that in case if something is new which is not been taught to you in this tuition, considering the CBSE syllabus, new revised syllabus, then please let me know. Okay, so let's begin the concept. So what we have done, the basic idea here is, now I'm not going to tell you any axiom or going to write any axiom. We are just directly using the axiom after this. Okay, so no writing axioms and all. So let's understand what exactly the concept is. Two things we understood. One thing is, we can add the two equations, or we can add or subtract the two equations, right? And then second thing, we saw that okay, we can multiply the two equations and we can divide by to both the side of the equations. Okay, so these are the two main concepts we discussed, and the same thing we are going to use to prove the later part. Now let us see. Is given, first of all let us use the given thing, okay, ABC, angle ABC. You can check in the diagram where is angle ABC, and second is ACB. Angle ABC is equals to ACB. One more thing is given, angle 3 is equals to angle 4. Now imagine from ABC, this angle, if I subtract this angle, ये जो angle है, if I subtract it, what is left? Angle 1 is left. And from ACB, if I subtract third one, angle 3, I get angle 2. So it's very clear that from ABC, I have to subtract angle 4 to get angle 1. Right? And from ACB, I have to subtract angle 3 to get angle 2. So what I am going to do, I will write this equation in a required order, that is angle 4 is equals to angle 3, which is very much important, and then I will subtract. This is equation number 1, equation number 2. Subtracting equation 2 from 1. So what do I get? Angle ABC minus angle 4 is equals to angle ACB minus angle 3. So ABC minus 4 is angle 1 is equals to ACB minus 3 is angle 2, and that's the required result. So henceforth we are not going to write the reason and all. Equals are subtracted from the equal and the remainders are equal and all that reasons we used to write yesterday, but that we are not going to write, because in the further topics we don't require that. Okay, I hope this is clear to everyone. Next, we are given AB is equals to BC. The same thing in terms of side it is given. AB is equals to BC. Check karo, it is AB and here is BC, that they are equal, right? And BX is equals to BY. BX is equals to BY. So I can write BX is equals to BY. So if I have to prove AX, what you can do, you can check AX in terms of given value AB and BX. What I have to do, I have to subtract. So subtract the two equations 1 and 2. Subtracting equation 2 from 1. So what do I get? AB minus BX is equals to BC minus BY. In geometry, when you are going to subtract, please look at the diagram. So AB minus BX is AX, and BC minus BY is YC or CY, and here is the required result. We are not writing any reason as a Euclid axiom, not going to write. Okay, so it's not required. Fine. Is this clear? So simple था. It was a revision of yesterday's what we have done. Okay, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि if m is a midpoint of AB, then prove that m is equals to half of AB. Very interesting सा क्वेश्चन है, easy भी है. I have to prove it. There is a AB here in this way. Here is A, here is B, and there is a midpoint.
What do I know about midpoint? That AM will be equal to MB, then only we call it as midpoint. So I know that AM is equals to MB. And I have to prove AM is equals to half of AB. मतलब this AM is equals to half of AB, which is very clear, isn't it? It is going to be half of AB. But I have to prove it. Now how can I prove that? कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ AM ऐड कर दो. Because we are allowed to add by Euclid's geometry, isn't it? दोनों तरफ AM I am going to add. तो AM plus AM इज इक्वल्स टू MB प्लस AM. दोनों तरफ मैंने क्या ऐड कर दिया? AM ऐड कर दिया, विच इज अलाउड. तो चेक करो, अब मैजिकली वी आर गोइंग टू गेट द आंसर. AM प्लस AM इज इक्वल्स टू 2AM एंड MB प्लस AM. इफ यू लुक एट द डायग्राम, प्लीज चेक MB प्लस AM डायग्राम एडिशन क्या होता है इसका? AB. 2 को मैंने अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो व्हाट डू आई गेट? AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड दैट्स द रिक्वायर्ड प्रूफ. Right? Is this clear? Now this concept we will be using. So imagine in case of any segment PQ, maybe it is PQ I am taking, and there is a R as a midpoint, then what you can write henceforth? Henceforth, whenever it is like that, whenever you get this kind of condition, you get PR is equals to RQ is equals to half of PQ. ये clear हो गया? Or you can write PQ as equals to double of PR or equal to double of RQ. So in this manner you can state if R is a midpoint. Okay, so henceforth whenever you get anything as a midpoint you can use these concepts. Clear? आगे बढ़ते हैं. We need all these things in your for the topics we need all these things. So you need to remember it at any cost, and it is very basic idea, very basic, very simple. Okay. इफ़ BE इज इक्वल्स टू DF, ओके, तो जो दिया है उसका यूज़ करते हैं. BE इज इक्वल्स टू DF, इमेजिन. ओके, BE इज इक्वल्स टू DF, ओके, ठीक है. एंड आई हैव टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू DC. ये कैसे करना है? सी, BE इज इक्वल्स टू DF. अगर मैंने डबल ऑफ BE किया इज इक्वल्स टू डबल ऑफ DF, इट इज़ अलाउड, इजंट इट? आई एम अलाउड टू टेक इट डबल ऑफ बोथ द साइड, राइट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ज्योमेट्री. तो डबल लिया दोनों का, इट्स ओके. तो BE का डबल क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, AB. और अभी भी हमने देखा इसमें, ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. DF का डबल क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा. एंड काम खत्म. आई गॉट द आंसर. इट इज इक्वल. यू कैन चेक, राइट. एंड लास्ट वन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कल से हम लोग लाइसेंस एंगल्स लेने वाले. आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द यूक्लिड ज्योमेट्री. अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द यूक्लिड ज्योमेट्री. क्या करो, दोनों वीडियोस को ठीक से फिर से देख लो, ओके. अदरवाइज यू विल फाइंडिंग थिंग्स डिफिकल्ट आफ्टर दिस, ओके. सो कीप दैट इन माइंड. तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं. देखो क्या दिया हुआ है, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. ये अंडरस्टैंड इट, C इज अ कंप्लीट मिड पॉइंट ऑफ AB. तो अगर C मिड पॉइंट ऑफ AB है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि AC इज इक्वल्स टू CB लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. देखो, AC इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो व्हेनेवर मिड पॉइंट है तो ये करो. अभी मैंने हाफ AB क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 1/4 AB ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो वही कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा. दैट्स द रीजन आई टुक इट एज हाफ ऑफ AB. सिमिलरली D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. ये जो D है ये AC का मिड पॉइंट है. तो व्हाट डू आई गेट? AD इज इक्वल्स टू, बिकॉज आई नीड AD हियर, AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. ये तो क्लियर हो गया. So these are the two equations I got it when these are the given midpoint. So D is a midpoint and C is a midpoint. ये दो equations मुझे मिल गया. अभी मैं दो equations को मैं ऐसे यूज़ करूँगा so that I get the required result. ये जो result है ये मुझे मिल जाए. तो इस result में मेरे पास ये clear है कि AD चाहिए मुझे. तो AD is equals to half of AC I know. ठीक है, तो AD को मैंने एक यूज़ किया, हाफ ऑफ AC को यूज़ किया. अभी AC को रिप्लेस करके मुझे AB चाहिए, अंडरस्टैंड इट, AB चाहिए. तो इज AC इज इक्वल्स टू समवे इन AB. यस, AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो AC के जगह पे मैं हाफ ऑफ AB लिख सकता हूँ ना. सिंपल सी बात है ना. तो चलो अभी मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इज AD इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AB. ये जो है रिप्लेसिंग और यूजिंग द इक्वेशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट्स इट. इट्स सो सिंपल, इजंट इट. आज के लिए वीडियो इतना ही. ज़्यादा कुछ वर्क आज नहीं करना है आपको, सिंपल है, लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री ठीक से लेकिन कंप्लीट करना. टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो. ये टॉपिक आपके सिलेबस से कैंसिल हो चुका है. आपको बस अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करना है तो सॉल्व करके देख लो एक बार. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम.
it will be of course helpful if you solve it. So don't consider you're doing it something a useless work. It is important work. So what we have reduced, we are not presenting the answer, we are not unnecessary at writing axioms and all that we have cancelled. So as syllabus is changed, we are also considering the change syllabus. ओके, सो कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं. टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो.